So basically, if I'm I influencing different people who has achieved great thing in their life, like Tarun has, a lot of other people also I want to bring up because the first thing they see is subscriber. Subscriber कितना है भाई? uh, Subscriber बताओ तब अपन आएगा. So for that reason, you have to subscribe this. It's for free. yeah, there is a saying, when you are good at something, never give it for free. And Nitish is so cool that he's giving it हाँ. out for free. So you should subscribe Great. it, right? This is the line. ये line intro पे bro. ये line intro पे. So Tarun, firstly, welcome to Chat with Champions. And Hi. how are you? Are you good? Yeah, I'm doing well. How are you? I'm great, man. So let me first tell you about this podcast and how this entire process works. So it's a completely candid podcast. We'll talk about everything and anything. Basically, we'll roam around the topics which you have achieved in your life, like IIT Bombay, IIM Ahmedabad, and all this overachievement thing. We'll discuss about it. Plus, we'll discuss about life and also about a lot of other thing as well about your hobbies, which you told that it's going to be very amazing. So we'll discuss about all this thing. So let's start from very basic. Let's start from very scratch. That can you just talk about your schooling life? How was it? Were you constantly topping the examination from very first ended, or is it something kick happened with you in some time in between or something of that sort? Yeah, so for me, it was always like that, I was the rank holder since first grade. Then, so like in terms of schooling, I have changed a couple of schools. So until fifth class, I was studying where my father was working in West Bengal. And then came to Rajasthan to live with my grandparents. Uh, at that time, yeah, my parents were staying in Bengal, but I was in Rajasthan from sixth grade onwards. Yeah, and until 10th, I was more or less among the top rank holders. How Yeah. this happened, you please? Because I'll tell you, my journey was completely different. Okay, I was like very bad at school and scores and everything. Okay, I was always the backbencher and always doing the mischievous thing and all this thing. And then 11, 12 I became serious, and also मतलब मैंने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा है, but comparatively what which was expected from me. Okay, ठीक है. So, how was it? Means what is the motivation behind it? Basically, is it the parenting part or what actually it is? If you can like Yeah. So think about it. yeah. So for me, it was never pressure from the parents, but it was always that support that was there in terms of providing the best school that was available at with whatever place we were, and in terms of facilities or any extra classes that I required help with, they were always supportive of that. And once you start getting those Hmm. scores and those performance, the expectation actually motivated me. Yeah, sometimes the expectations get better of you, Hmm. and that's completely fine. It's completely natural. But for me, it was never pressure. It was never a pressure. It was more of the thing like, yeah, you are doing well and you should keep doing it. Even if you don't do it, then it's fine. So for me, it acted like a confidence booster from the beginning. So parents ka support would be the primary reason, I think, in my primary schooling, where I achieved a lot of things. Like when during 11, 12, when I was like preparing for JE and all this thing, my teacher used to say that there is always that IIT ka kida. Okay, it's there, हाँ. it's some person and it's not there for like आप कुछ भी कर लो, कितने भी एफर्ट लगा लो, वो लेकिन वो आईआईटी का कीड़ा होता है. ठीक है, और वो उसी हाँ. होता है, वो दिख जाता है वेरी फर्स्ट डे ही एंटर्स द क्लासरूम. ओके, वो क्लियर होता है कि यार जाना तो आईआईटी में ही है, लेकिन वो जो बाकी लोग होता है ना वो लोग होता है कि शुरू करता है आईआईटी बॉम्बे से ही, देन दे लाइक कि यार आईआईटी आर आल्सो नॉट बैड एंड दिस एंड अप गोइंग इनटू प्राइवेट कॉलेज. आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ. Okay, it's that thing. So you had that IIT wala kida. Okay. मेरे केस में I would say it was very late. So for me, until ninth grade, I was not sure what I'm gonna do. I was very good at maths, and I wanted something which utilizes that skill set of mine.
नाइन तक आई डिडंट इवन नो कि इंजीनियरिंग में आईआईटी इज लाइक दैट बिग टैग. फिर मैंने टेंथ में पता करना शुरू किया व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज देयर आर. तो मेरे को साइंस लेने के लिए सब लोग वर लाइक यू आर गुड इन स्टडीज, टेक साइंस. बट कॉमर्स में ऐसा था कि मैथ्स की थोड़ी स्किल्स यूज होती थी, तो आई वाज कंफ्यूज अंटिल टेंथ. मेरा श्योर नहीं था. बट टेंथ में व्हेन आई read something, talk to people, तब मेरा फिक्स हुआ कि आई वांट टू एक्चुअली डू इंजीनियरिंग आईआईटी वाला. एंड देन फिर 11 12th आई वेंट टू कोचिंग क्लासेस. वो कोटा गया था, तो वो पूरा वही वाला स्टोरी है मेरा. एंड देन वहां Did you drop a year or is it first attempt? नो, इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट. 12th में ही आई क्लियर्ड इट. तो कोटा गया, तो वहां पे एक्चुअली आई वुड से दैट वाज द टाइम जब मुझे वो आईआईटी वाला कीड़ा एक्चुअली आया. व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड वर्किंग सो हार्ड फॉर समथिंग एट दैट टाइम. इवन लाइक मेरे घर से तो सपोर्ट था ही, बट इवन द कोचिंग क्लासेस में जो एनवायरनमेंट था, आई ऑलवेज टुक when there was a lot of competition around me, I took it as a positive thing for myself to motivate myself. Initially it was difficult going to Kota, to a new city. when पहली बार एकदम घर से दूर था मैं. So initial 6 months my performance was also not very मतलब अच्छा. But after 6 months I realized like I have come here and I have to make best use of my time, and I need to slightly work hard. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. तो फिर उसके बाद इट वेंट स्मूथ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. तो इट वाज लाइक दैट. आई वाज इन वाइब्रेंट एकेडमी. तो वो उसका सेकेंड ईयर था व्हेन आई एनरोल्ड. इट्स अ लॉन्ग टाइम. आई एनरोल्ड इन 2011. तो उसका सेकेंड ईयर था, आई रिमेम्बर. हाँ. So it must be a journey worth to say or remember, or मतलब memories बहुत सारी जुड़ी होती है, क्योंकि lot of I haven't studied from Kota. Basically lot of my friends have studied from Kota and they have lot to tell about Kota. Kachori and that lot of things are there, because it's like कि वो vibe ही अलग है, Kota वाली vibe. Going to tuition with and all. Because all this I have heard from my friends only. So it's a different 2 year. It's a different life altogether, right? First time you have gone outside, and then you are living all this thing. So how's your memory? Means is it completely studious or is it something other than that also? नहीं, तो शुरू के 6 महीने आई वुड से मोर देन स्टडीज इट वाज होम सिक वाला फीलिंग. इवन द फूड आई डिडंट लाइक देयर. आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एट दैट टाइम. और मतलब मेरा पढ़ाई पे सी आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे पढ़ना है. बट द थिंग इज, मैं जब पढ़ने बैठता था उतना मन नहीं लगता था. अंटिल 10th आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडिंग बिकॉज आई यूज्ड टू गेट दैट परफॉर्मेंस एंड मुझे वो अच्छा लगता था. बट जो 11th का फर्स्ट हाफ है आई वुड से थोड़ा सा वैसा था. एंड उस टाइम पे मैंने स्कूल भी ऐसा एनरोल कर लिया था. दैट वाज नॉट अ डमी स्कूल, सो आई हैड टू अटेंड स्कूल्स एज वेल सम. हाँ, so I used to go a couple of days to school as well. उस टाइम पे मेरी आफ्टरनून क्लासेस होती थी. So शुरू के 6 months I didn't even know कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, because मैं वहाँ पे इतना ज्यादा first 6 months would be more introvert kind of thing मेरा कोटा में. I didn't used to talk, और वो वाला पीरियड था, होम सिक वाला पीरियड था. But after 6 months I guess I made some friends जहाँ पे मैं रहता था, जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे. और इवन कोचिंग में आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग. आई यूज्ड टू स्टडी अलोन पहले पूरा, लेकिन बाद में आई यूज्ड टू डिस्कस विद फ्रेंड्स. दैट हेल्प्ड अ लॉट. सो आई थिंक या एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, हार्ड वर्क अलोन जो तुम अकेले करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट. बट टॉकिंग टू पीपल, आई थिंक दैट हेल्प, दैट गिव्स यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो इवन कुछ चीजें जो मेरे से सॉल्व नहीं होती थी, उससे भी मैं पता करके मैं बोलता था हाँ ये ट्रिक अच्छी है. So those kind of things, and जो नॉन अकेडमिक बॉन्ड है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हुआ. So that was the turning point for me, I would say, जब मैं कोटा गया था. Great, man. Dude, it's going to be very difficult for you if I ask you such question, but please try to recall, okay, all those things. Basically, yeah. When you started preparing for JEE and all this thing, was it how you actually started preparing for it? Because a lot of people start giving mocks first and then they go it in that way preparation wise, or was it initially you were focusing more into like grasping all the concepts and all this thing, then giving examination? How's it all working?
and how frequently you were giving the mocks and everything, and when actually you started giving the mocks, because a lot of people start giving it in 11 itself, or some start in like before the examination or something. For what was your तो strategy? मे हाँ तो मेरे केस में क्या था, बिकॉज आई जॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ना, दे हैव अ वेरी स्टैंडर्ड पाथवे Hmm. IIT prep ka. So Hmm. they used to have DPPs, which Ah. daily practice problems you used to solve daily for Hmm. all PCM subjects. And then they used to have weekly tests. मतलब हर वीक में एक टेस्ट होता था वाइब्रेंट लेवल पे. दैट यूज टू हैपन. तो 11th में आई डिडंट गिव एनी मॉक ऑल इंडिया लेवल पे. वाइब्रेंट का लेवल पे आई यूज टू गिव, एंड वाइब्रेंट हैड लाइक गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ back at that time. If I recall, it was around 1500 to 2000 उस टाइम पे काफी था. Hmm. तो that was going good. उसमें परफॉर्मेंस स्टार्ट नीचे हुआ था. लाइक आई गॉट फोर्थ बैच फ्रॉम ऊपर से 1 2 3 4 होता है, तो आई गॉट द फोर्थ बैच में एडमिशन. एंड देन शुरू के 6 months में आई डिड नॉट चेंज दैट बैच. शफलिंग होती है वहां पे हर 1 2 महीने में. बट स्लोली एंड स्लोली फिर 4 से 2 2 से 1 हो गया था. बाय 12th स्टार्टिंग आई वाज इन द फर्स्ट बैच वहां पे कोटा में. तो मैंने मॉक्स के पीछे इतना नहीं भागा. एक्चुअली जो कोचिंग का जो पूरा पाथवे है उसको फॉलो किया. स्टिल आई फील के concepts, doing concepts Hmm. is definitely more important than mocks in case of IIT. जे अगर आप जेई का प्रेप कर रहे हो, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, बिकॉज जो उसका पेपर होता है Hmm. दैट इज नॉट ओनली टेस्टिंग योर ability to solve questions quickly, but applying your aptitude also. कुछ questions होते हैं जो that are like passage questions. 4 5 क्वेश्चन होंगे उस पे. So if you spend some time in terms of concept clear करके, तो you will solve all 5 of them. Hmm. अदरवाइज नहीं हो पाएगा. जो कि मे बी अगर हम कैट का बात करूं तो कैट में मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट Correct. जेई के लिए आई वुड से concepts आर मोर इम्पॉर्टेंट इन 11th. एंड 12th में यू कैन स्पेंड योर टाइम इन मॉक्स. बट गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स, it has not, like, I have not done it. Hmm. And I personally have that notion that, yeah, doing a lot of mocks without your concepts being clear wouldn't help you a lot, because you will be leaving it to chance on the exam day, because your concepts are not clear. So अगर उससे question आ जाएगा, even though you have done a lot of mocks, your speed is very good, but you will not be able to crack those questions. तो Sure. वो मेरा opinion है उसमें. Sure, sure. Basically, like when you started giving mocks for like JEE advance or mains or something of that sort, you must be pretty aware about the fact that you're gonna get a good rank in maybe definitely clearing the advance, because a lot of people who clear the advance start getting good ranks in their institution and all this thing. So how was it basically like? Were you completely aware, or was it the firstly, if you can share your rank here also, that what was your rank in JEE mains and advance? And also, were you expecting even better or less, or how was it? ठीक है. तो मेरा ईयर वाज द वन वहां पे मेंस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था. Hmm. अंटिल दैट टाइम जेई का एक सिंगल एग्जाम होता था. बट फॉर माय केस इट वाज जेई मेंस, एंड देन यू नीड टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 80% इन बोर्ड्स एज वेल Hmm. टू क्वालिफाई फॉर द एडवांस. तो वो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था. तो उस साल काफी फोकस था सीबीएसई के भी उस पे, कि सीबीएसई का वो भी करना है, 80% तुमको लाना है, राइट. तो वो वाली चीज भी थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट टारगेट था मेंस क्लियर करना. मेंस में आई वाज एक्सपेक्टिंग नॉट अ वेरी गुड रैंक, बिकॉज उसमें वेटेज था 12th के मार्क्स का भी. एंड मुझे पता था कि मैंने 12th के लिए उतनी मेहनत नहीं की है जितनी शायद जेई एडवांस के लिए की है, Correct. राइट. एंड सीबीएसई की एग्जाम इज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड होता है. Hmm. तो बट आई गॉट गुड रैंक. तो 5000 के आसपास मैंने एक्सपेक्ट की थी मेंस में. Hmm. बट आई गॉट 1505 ऑल इंडिया. 1515 आई गेस आई गॉट द रैंक मेंस. तो मेंस के लिए हिसाब से वो काफी अच्छी रैंक थी. इट वाज टॉप 0.1% उस टाइम पे. तो उसके बाद एडवांस के लिए 1.5 महीना बचा था. एंड वो जो 1.5 महीना था उसमें मैंने काफी मेहनत की थी. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रैंक इन 3 digits, बट मेरा रैंक 1505 आया था Hmm. in advance. So it was not exactly what I expected there, but still मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं था.
So I was more or less happy. Mera target, so for me it was very clear. I wanted IIT Bombay. Okay. मेरे को कॉलेज लेना था. आई डिडंट गो फॉर डिपार्टमेंट Okay. टाइम. तो मेरे को पता था 1505 में आई माइट नॉट गेट मे बी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बट आई गेट केमिकल या सिविल. तो मेरे को सिविल मिल गया था. मैंने भरे भी बॉम्बे ही थे लाइन से. मतलब मैंने ऐसे सारे डिपार्टमेंट. ब्रांच वाइज नहीं भरे थे. अच्छा. आई फिल्ड बॉम्बे के हिसाब से बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर. तो मेरे को सिविल में एडमिशन मिला था विच आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ. सो उसके लिए फिर मैंने फर्स्ट ईयर आईआईटी में जाके थोड़ी मेहनत करके आई चेंज माई ब्रांच बेस्ड ऑन फर्स्ट ईयर परफॉर्मेंस. आई स्विच टू केमिकल इंजीनियरिंग. तो दैट वाज माय जर्नी इसमें. So it must be why would like if I may ask, like, why IIT Bombay only? You just want to be into the finest institution of India? Was it the first thing? Because I agree to the fact that we don't know much about the departments before we enter the college. We had no, like, the basic stereotyped idea we have, like कि okay, this department CSE IT में placement बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो. Because very class 10, if I think like a class 10 boy, then I would think that ki engineering for me means mechanical or civil or that only. Okay. वो 11 Yeah. year as CSE IT में ही placement होता है. Okay, then I got हाँ. a lot of other departments are also there. And then why for you is it IIT Bombay only? Is it some thing you figured it out later? For me, it's a very different reason. It was the fascination for the city. हाँ. So मेरे को बॉम्बे से फैसिनेशन. हाँ, लाइक मुझे बॉम्बे से बहुत फैसिनेशन था बचपन से. आई एम अ बॉलीवुड बफ. सो मैं बहुत मूवीज देखता था उस टाइम पे. एंड बॉम्बे का एक्चुअली हियर से में भी अगर देखो तो बॉम्बे दिल्ली वर द टॉप टू कॉलेजेस जो कि मतलब नाम भी सुनते थे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. लोगों से भी पूछो तो बॉम्बे दिल्ली. एंड फॉर मी बॉम्बे वाज डेफिनेटली अ पिक अमंग बॉम्बे एंड दिल्ली. आई मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस था फॉर आईआईटी बॉम्बे. तो इट इज मोर और लेस मेरा फैसिनेशन फॉर द सिटी रादर देन इतना डिपार्टमेंट सोचने का एंड ऑल. बट हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं काउंसलिंग कर लिया, जब मैं वहां पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे, देन आई रियलाइज नहीं, डिसीजन शुड नॉट ओनली बी बेस्ड ऑन कॉलेज के. भाई कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिल गई ले लिया. बिकॉज अल्टीमेटली आपका करियर पाथ डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर स्टडिंग फॉर दोज 4 years. Let's say if you pick a branch which you are least interested in the best college of the country, still it will not add value because जो तुम पढ़ रहे होगे उस पे तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. So you will not be able to do well there. So I think branch matters a lot, especially in engineering. अगर आप core engineering में जाना चाहते हो, then look के कौन सा decent college तुमको तुम्हारी मनपसंद ब्रांच में मिल रहा है rather than going for the best college and any branch that you have no idea about. So मेरा भी केस यही था. मैकेनिकल सिविल मेरा भी नोशन यही था. इंजीनियरिंग यही होती है, राइट? एंड देन आई वाज लाइक ठीक है बॉम्बे में सिविल मिल रहा है. बट देन आई वेंट देयर, आई रियलाइज कि सिविल इंजीनियरिंग इज समथिंग बहुत ही कन्वेंशनल है एंड इट इज समथिंग जिसमें मेरे पास आगे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाएंगे. Whereas केमिकल कंपनीज का, केमिकल इंजीनियरिंग में तुम्हारे पास ऑप्शंस काफी ओपन रहते हैं. इवन द एफएमसीजी कंपनीज कम, कोर इंजीनियरिंग एनर्जी कंपनीज कम. सो प्लेसमेंट वाइज भी इट इज much beneficial for me to be in chemical. So my decision was based on that city wala fascination, but I would say branch matters a lot in engineering. But later you changed. हाँ, I changed. So first year मैं वहाँ काफी क्लियर था. I had a mentor. मेंटर ने मेरे को बोला था हाँ ठीक है सिविल. He was from chemical, so he told me that हाँ सिविल इंजीनियरिंग is good, चिल होता है सिविल इंजीनियरिंग. बट इफ यू रियली वांट आगे थोड़ा बहुत मतलब एग्जिट ऑप्शन ज्यादा रखने हैं या फिर बाद में स्विच भी करना है, एफएमसीजी कंपनीज मतलब प्लेसमेंट ड्रिवन भी रहना है, तो इट्स बेटर टू वर्क हार्ड एंड स्विच टू केमिकल और मैकेनिकल. तो इसलिए फिर मैंने फर्स्ट ईयर थोड़ा ज्यादा एफर्ट पुट इन किया था. एंड आई थिंक 10%, टॉप 10% को वो अलाउ करते हैं इन फर्स्ट ईयर टू अप्लाई फॉर अ ब्रांच चेंज. एंड इफ यू गेट दैट देन इट्स गुड. तो मेरे को मिल गया था लकीली. सो दैट वाज गुड. Great, man. I'll tell you, anybody who is like has prepared for JEE
has one fascination to know at least about how's the life at IIM Bombay, because every student, every aspirant has first thought in their mind is कि यार जाना है IIT Bombay में जाना है, maybe they doesn't turn out or something. So how's life at IIT Bombay? Basically, it must be, you must be surrounded by best of minds. Okay, so how difficult it is, or how is it somewhere rejuvenating, or it's all the time you're constantly surrounded by study and do something in their life? How's life basically? Life is awesome at IIT Bombay. I would say तीन चार चीज है. First of all, the campus. It's one of the best campuses. So it's surrounded by two beautiful lakes and one national park. It's also has a posh like Hiranandani area which has developed near IIT Bombay. So campus is very good. Even campus के बाहर और अंदर में you will find के 5 डिग्री का फर्क रहता है टेम्परेचर में. It's lush green. IIT Bombay के अंदर का campus. It has lakes inside the campus. You can go to lake house and all those things. So it is very good. First of all, infrastructure has developed a lot. Sports facilities are world class. तो सब ओलंपिक साइज पूल्स है, बैडमिंटन कोर्ट्स इंडोर है, तो काफी अच्छी फैसिलिटीज है. सो दैट इज देयर. सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जो इंटर आईटी का क्रेज होता है ना, वो काफी आईआईटी बॉम्बे में. अ लॉट ऑफ पीपल प्ले स्पोर्ट्स. वी हैव स्पोर्ट्स कंपल्सरी इन फर्स्ट ईयर. यू हैव टू डू वन ट्रेन, मतलब कोई एक स्पोर्ट पिक करके यू हैव टू गो ट्रेनिंग उसमें रेगुलरली. और यू कैन पिक एनएसएस एज वेल और एनसीसी, वो भी होते हैं, बट एनएसओ लेते हैं मोस्ट लोग. देन टीचर्स, आई थिंक दे आर पैशनेट मैन. मतलब उनका कोर जो पैशन है ना, दैट इज टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. एंड जितना मैंने नोटिस किया आईआईटी बॉम्बे में, प्रोफेसर्स इतने अप्रोचेबल, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आउटसाइड ऑफ ऑफिस या इवन ऑफिस, कई बार हमें लगता था दे आर सो स्ट्रिक्ट, but their passion for teaching is something I respect a lot after graduating from IIT Bombay. And बहुत कम जगह तुमको ऐसा पैशनेट टीचिंग या पैशनेट कोई मिलता है जिसका फ्रूट्स वो लोग नहीं बेयर कर रहे हैं, हम लोग को वो फ्रूट्स मिल रहा है, राइट? सो वी आर गेटिंग रीपिंग दोज बेनिफिट्स. सो दैट इज वन थिंग. एंड या फ्रेंड्स, मतलब आईआईटी बॉम्बे में जो लोग हैं सब जगह से आते हैं. मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम, इट्स लाइक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अंदर आईआईटी बॉम्बे के. तुमको सब जगह के लोग मिल जाएंगे. सो आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. एंड वन गुड मेमोरी अबाउट आईआईटी बॉम्बे इज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स जो मैंने बनाए. सो आई थिंक academics तो है ही, but all of these things make IIT Bombay a great campus to be in, and that's why it is actually respected so much among all the, कोई भी रैंकिंग आती है या कोई भी रिव्यूज तुम लेते हो आईआईटी बॉम्बे का, इट इज ऑलवेज गुड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस कंबाइंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. सो आई थिंक दैट विल बी द मेन रीजन व्हाई आईआईटी बॉम्बे का क्रेज है, अभी भी है. The competition wise, how's the like mahal in the basis of competition? Is everybody competing with each other, or is it like not that much of thing is there which is from outside, or is it actually there? आई वुड से कि शुरू के 3 साल तो इतना कंपटीशन वाला बिल्कुल भी नहीं रहता है वो, ठीक है? बिकॉज फर्स्ट 3 इयर्स सब लोग अपने अपने घर से आते हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम न्यू प्लेस, तो फ्रीडम एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं. फर्स्ट 3 इयर्स तो एक्सप्लोर करने में, सिटी फ्रेंड्स बनाने में, ट्रिप्स पे जाते हैं सेमेस्टर ब्रेक्स में. इवन कुछ लोग को जिनको मतलब रिसर्च इंटर्न मिल जाती है, फॉरेन जाते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं. इंटर्नशिप, फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक अप 3 of your years. एंड देन प्लेसमेंट्स का जब टाइम आता है ना, दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू फील के वो कंपटीशन वाला फीलिंग आना शुरू होता है. बिकॉज एवरीबडी नाउ नोज के अब just 1 year left, and then you have to move on to the next phase of your life, and you want to secure the best placement, you want to secure the best chance के आगे क्या करना है. कुछ लोगों को रिसर्च में जाना है, तो they try to find the best research institute that they can get into. कुछ लोगों को बेस्ट फॉर्म्स में जाना होता है because they want to get that engineering का यूज, मतलब अच्छी जगह अप्लाई करना है, राइट? कुछ लोग एकदम ही नॉन कोर फील्ड में चले जाते हैं क्योंकि उनको कोर इंजीनियरिंग पसंद नहीं आती. सो नॉन कोर के रोल्स भी आते हैं वहां पे. सो आई थिंक हाँ,
शुरू के 3 years there is not a lot of competition. It's more of a collaboration kind of thing. मतलब तुम साथ में प्रोजेक्ट्स करते हो, लैब प्रोजेक्ट्स साथ में होते हैं. बट ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर आई वुड से थोड़ा सा कंपटीशन वाला आता है. बट जस्ट आफ्टर प्लेसमेंट सबको पता होता है 4-5 महीने बचे, दिसंबर में प्लेसमेंट हुआ, तुमको अप्रैल में खत्म हो जाएगा. सो फिर वो वाला जो टाइम है दैट इज द बेस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सॉर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसके बाद सब लोग मतलब चिल मारते हैं. जो लास्ट का 8th सेमेस्टर होता है इन अ बीटेक, आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक का 8th सेमेस्टर आफ्टर प्लेसमेंट, इट इज जस्ट द बेस्ट. क्योंकि तुम उस टाइम पे इतना कंसर्न नहीं होते हो प्लेसमेंट पढ़ाई सबको लेके. यू वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर रिमेनिंग टाइम एट आईआईटी बॉम्बे. तो आई थिंक ओनली 7th सेमेस्टर इज द वन जहाँ पे तुमको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव वाला फीलिंग आता है. उसके अलावा आई डोंट थिंक आईआईटी बॉम्बे में वैसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. Okay, great, man. Great. Actually, it's even more exciting than what we used to think about IIT Bombay. Great. So let's come out of IIT Bombay. What was your next like? Where did you got placed, or is it you got into multiple placement, or you chose one? What was it after that? So for me, it was Shell. It's an energy company, MNC. So I got placed at Shell. I wanted to do core engineering. Okay. Just out of IIT Bombay, I wanted to apply whatever I had learned. And I got the opportunity to be in Shell, which is one of the best companies for chemical engineers at IIT Bombay. And I took it up happily as soon as I got the offer. Yeah. I started there in 2017 August, and until I decided to do MBA, I stayed there. So I have not switched the company. Like I worked there for about 4 years. 4 years in Shell. Yeah. So I worked for 4 years in Shell itself, and The company in between, or what was your plan? Huh? Was it like a lot of people who start working in like couple of years, they start thinking to switch to other company for higher monetary benefits or for get a better hike or something of that sort. So haven't you thought about it in like after 2 years or 3 years? You've been 4 years in same company. It's a big deal. So I think there are two primary reasons. Yeah, three primary reasons I can say. First of all, monetary. You start thinking कि हाँ भाई switch करके थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है. In that term, Shell was one of the best paying companies. Work life balance भी अच्छा था. तो वो कभी भी reason रहा नहीं Shell में कि ठीक है तुमको just because you are earning some थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर you want to switch. तो वो reason नहीं था. Second thing, of course, is that you don't like the job and you feel कि तुम्हारा growth उतना नहीं हो रहा है. So for me, that was also not the case because Shell में I was learning every day. I got the opportunity to travel to so many countries. I traveled to like 15 countries working for Shell, and they have different assets in different countries. So I got that opportunity, and हर जगह जाके apart from the technical skills, you learn about the different culture, meet new people, find new ways of working, how to get things done. So learning wise मेरा सब कुछ अच्छा था शेल में. So कभी वो भी रीजन नहीं रहा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मेरा जॉब. एंड द थर्ड थिंग इज तुम बोर हो जाते हो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. ये थर्ड रीजन होता है. इट्स जस्ट दैट नो अदर रीजन. यू जस्ट वांट न्यू स्टार्ट अगेन टू योर करियर फॉर नो रीजन व्हाटसएवर. तो मेरे केस में वो भी अंटिल फॉर द फर्स्ट 4 years तो नहीं था. मतलब मैं काफी खुश था जो भी मुझे मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी. इवन ऑयल मार्केट इतना अच्छा था तो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज एज वेल टू ट्रैवल एंड लर्न. सो वो भी रीजन नहीं था. तो दैट्स माय प्राइमरी रीजन कि ये तीनों रीजन नहीं थे इसलिए मैंने फिर स्विच नहीं किया. आई स्टेड देयर इन शेल. एंड उनका कल्चर, work culture is very good. People are very good. They are very supportive of a graduate's growth. Shell as a company, they have a structured graduate program that you are a part of. So उस terms में भी it was very good. तो मैंने कभी switch करने का सोचा नहीं up until 21. Sure, man. Because like if I see your journey up till now, then you have been graduated from IIT Bombay, one of the finest institute. You're working Shell, where you're saying that you're having the best culture and everything, work and everything was good. So, bhai, ye MBA, from where it come from? What was the thought behind it? How did it come all of a sudden?
ठीक है, तो मैंने जब आईटी बॉम्बे में था, सो आई डिड माय मेजर इन केमिकल इंजीनियरिंग बट आई डिड अ माइनर इन मैनेजमेंट। उस टाइम पे मुझे थोड़ा, हाँ, सो आई डू हैव अ माइनर डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम एसजेएम सोम आईटी बॉम्बे। वो सो हाँ, तो तब मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था मैनेजमेंट में, एंड मेरा क्लियर था उस टाइम पे कि आई इन लॉन्ग टर्म आई वांट टू बी इन अ टेक्नो मैनेजरियल रोल, जिसमें थोड़ा टेक्निकल स्किल्स भी यूज आए, एंड देन अल्टीमेटली आई मूव टू अ मैनेजरियल रोल। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग में थॉट था 2017 में, एंड शेल वाज द बेस्ट प्लेस के हाँ, टेक्निकल स्किल्स डेवलप होगी और फिर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप। great. मेरा प्राइमरी रीजन था 21, सो दिस कोविड थिंग केम राइट 2020 में पूरा, एंड ऑयल मार्केट ऑल्सो वेंट डाउन। Yes, sir. तो आई, हाँ, आई वाज एक्चुअली इन, आई वाज ऑन एन असाइनमेंट इन पर्थ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं वहीं पे था, आई गॉट स्टक देयर फॉर about 6 months due to COVID. I couldn't come back. But I knew कि वापस आने के बाद भी in terms of those opportunities, they will take some time, right? You need to reset. Even a company like Shell, they will need to rethink about its strategy once the oil market is so down. So in terms of opportunities, उस टाइम पे जो मुझे चाहिए था, जिस ग्रोथ, जिस लर्निंग कर्व पे मैं था, वो लर्निंग कर्व अगर थोड़ा सा भी प्लेट्यू हो रहा था या फिर उतना स्टीप नहीं था, हम्म, तो I don't blame the company, but it was just at that time I thought कि maybe the time has come to for me to make that switch. Initially I thought मैं within Shell ही एक non-core role में जाके I will learn those skills, हम्म, and within Shell also I will take that techno managerial role. हम्म, But for me that opportunity was not coming in 21. I realized that COVID के time पे 2020 में actually. हम्म, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मे बी अ फॉर्मल ब्रेक 2 साल का लेके एमबीए डिग्री करके आई कैन मे बी स्विच टू अ डिफरेंट कंपनी और स्विच टू अ न्यू सेक्टर। कोई जरूरी नहीं एनर्जी सेक्टर। सो इन 2020 मिड आई रियलाइज कि ठीक है, कैट देना है इस साल, okay. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जून 2020 फॉर कैट। आई रिमेम्बर एग्जैक्टली। 2020, and you given CAD on November 2020, same year. Yeah. So I prepared for around 5.5 months for CAT. So basically, it has been considered that for IITians or somebody who has done engineering, QA they are good at. Okay, something needs, Yeah, yeah, we like VARC is like maybe may not be, but QA everybody, all engineers are good at QA. So VARC, I will ask you that whether you are good at VARC or you develop the skills of English reading comprehension and all this thing. And what about LRDI? How did you what before starting the preparation? How were you at these three things? हाँ, तो मेरे केस में भी मोर और लेस सिमिलर थिंग्स थी। क्यूए में आई वाज डूइंग वेरी वेल, Okay. मॉक्स देना स्टार्ट किया था इनिशियली, उसमें तो क्यूए हो जाता था। डीआईएलआर में भी इट वाज लाइक इनिशियली यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिक बिहाइंड डिफरेंट सेट्स, Hmm. एंड तुम 3-4 मॉक देते हो, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है स्टार्टिंग में, कौन सा नहीं करना है। तो डीआईएलआर एंड दिस वर सॉर्टेड। वीआरसी इज एक्चुअली, मतलब इंग्लिश अच्छी भी होती है ना, बट वीआरसी इज वन पोर्शन जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी थी, बिकॉज उस लिमिटेड टाइम में टू ऑब्जॉर्व एवरीथिंग इन दैट पैसेज Hmm. and then critically answering those questions, even though you think that your answer is right, Hmm. but actually the options are pretty close to each other. Sure. So and उस केस में मेरा स्टार्टिंग में आई वुड से बीएआरसी में कई बार आई स्कोर्ड ओनली 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल इन सम मॉक्स, एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा इससे तो, एंड मतलब अगर आई का अहमदाबाद का सोचना भी है तो। Sure. तो फिर वीआरसी में इज द मैंने स्टार्ट किया टू रीड अ लॉट। मेरे लिए दैट वर्क। आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज, इवन लाइक मॉक्स जो होते हैं, सेक्शनल टेस्ट देना शुरू किया मैंने वीआरसी का। पहले क्या होता है इनिशियली, क्यू व्हेन यू आर गुड एट समथिंग ना, जैसे क्यूए में मैं गुड हूँ, Hmm. तो आई विल थिंक के चलो क्यूए देते रहते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा होता Sure. रहेगा होता रहेगा, एंड इनिशियली यू स्टार्ट थिंकिंग दैट, बट जो चीज तुम्हारी वीक होती है इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, वीएआरसी इज द वन दैट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो मुझे उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्यूए तो मैं संभालूं। तो फिर मैंने ये जो टेक्निक्स है पढ़ने का शुरू किया इन टर्म्स ऑफ
जो भी पैसेज भी होता था उसका आई यूज टू ट्राई टू समराइज इट इन माई माइंड. समझ लो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, लेट्स से इट्स अ 10 minutes आर्टिकल आई रेड, एंड देन आई यूज टू समराइज इट इन माई माइंड कि ठीक है, अगर मुझे 5 लाइन में एक्सप्लेन करना होगा किसी को तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन. सो दैट हेल्प अ लॉट. मेरी रीडिंग स्पीड फास्ट हुई. ठीक है. सो वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वीआरसी में, दैट योर रीडिंग स्पीड नीड टू बी फास्ट एंड यू नीड टू एक्चुअली कैच द एसेंस ऑफ द पैरा. एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड. 70% से वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ. सो इट वाज अ जर्नी फॉर मी वीआरसी में एटलीस्ट. एंड टिल द वेरी एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि वीआरसी में हाउ वुड आई डू. बट ठीक है, जितना सोचा था उससे अच्छा ही हो गया वीआरसी फाइनली. Sure. For example, if you have started preparing for like CAT, then how did you actually started preparing? Because CAT is all about giving mocks and mocks and mocks, and then you analyze the mocks and see and this whole thing. That's how it works. So was it the same for you also, or did you initially started, working on the basic concepts and all this thing, and then jumping into the mocks, or was it like initially when you started giving mock and then how's the process? Was it like from back or आई from? थिंक हाँ. नहीं, यहाँ तो आई डेफिनेटली अग्री विथ यू कि मॉक्स मतलब फॉर मी इट ऑल्सो वर्क कि मैं पहले मॉक्स दिया एंड देन आई ट्राई टू एनालाइज व्हाट आर माय मिस्टेक्स, व्हिच कंसेप्ट आई एम नॉट वेरी क्लियर. लेट्स से नंबर सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्यूए में, देन आई यूज टू गो एंड स्टडी के ठीक है ये कंसेप्ट क्या है. लेट्स से एल्जेब्रा में तो नहीं आती थी, कोई और सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में लेट्स से मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो फिर आई यूज टू गो एंड स्टडी आइडेंटिटीज है क्या क्या, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट. सो for me it worked like I started giving mocks from day one and then जो भी mistake होती थी I used to analyze it. So मेरा ऐसा था कि I used to give तो मेरे पास 5 महीने थे ना, तो I was like कि मेरे को हर वीक में 2 to 3 मॉक्स देता था और उनको एनालाइज करता था. दैट वाज माय स्ट्रेटेजी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा काम भी चल रहा था. आई हैडंट क्विट. ठीक है, तो मैं काम करके आता था लाइक लेट्स से 5-6 फ्री हो जाता था, देन रात को बैठ के वो मॉक्स देता था मैं. एंड उसी साल अनाउंस हुआ था कि कैट भी 2 आवर्स का हो गया 3 आवर्स. सो दैट वाज द फर्स्ट ईयर. तो स्पीड वाज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट देन, एंड वीआरसी फिर और फास्ट पढ़ना है सिमिलरली राइट. तो वो वाली चीजें फिर मैं करने लग गया था. सो आई वुड रेकमेंड इस केस में contrary to JEE prep, Sure. Mocks is important and then build your concepts. That will be a better strategy according to me. Okay. Now, just want to know two things. Firstly, before giving the examination, were you constantly scoring, because you must have scored 99 plus only, as I'm expecting, because I am Ahmedabad. So, were you constantly scoring 99 plus in mocks also, or sometime it's high, low, or was it something like that? And also, apart from CAT, how many did you appear for any other B school examinations as well? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक्स का एक चीज होता है कि whatever percentile you get in mock, generally for most people you get a better percentile in CAT का एग्जाम. बिकॉज जो मॉक्स ले रहे हैं ना दे आर थोड़े से ज्यादा सीरियस होते हैं. सो आई जॉइंड लाइक मैंने टाइम पे सीरीज लिया था, तो उसमें मेरा जनरली 95-96 आता था. कई बार 98 भी आते थे, बट 95-96 भी आते थे. एंड इवन उन्होंने भी बोला है कि whatever percentile you score here, you will definitely score better in all India, क्योंकि तुम्हारे एप्लीकेंट्स उतने बढ़ जाते हैं राइट. कैट के जो मॉक्स है ऑल इंडिया लेवल पे बहुत कम लोग देते हैं. तो दैट इज द केस फॉर मी. तो मैं काफी क्लियर था, इवन दो मेरे 95-96 आ रहे थे कुछ मॉक्स में, आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं फाइनल में आई विल स्कोर 99 के ऊपर अगर इसमें 95-96 आ रहे. देयर वर टाइम्स व्हेन देयर वर टफ पेपर्स, और मे बी मेरा वर्क शेड्यूल ऐसा था कि मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड रहता था. तो 92-91 वाले मॉक्स भी हुए हैं. टुवर्ड्स लास्ट 2 मंथ्स बचे कैट में 91-92 भी आए. तो आई वाज लाइक ऑलवेज फीलिंग के ठीक है कोई बात नहीं, एनालाइज करो. आई कैन, सो आई ऑलवेज फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स. आई कांट फोकस ऑन अदर्स परफॉर्मेंस राइट. आई कैन जस्ट इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस. तो मैं यही देखता था कि मेरी कहाँ गलती हुई है. उसमें उनकी जो मॉक्स थे उसमें एनालिसिस पे काफी वो लोग देते थे कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया तुमने,
इस क्वेश्चन पे एवरेज बाकी लोगों ने कितना टाइम लगाया. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई यूज टू फोकस कि मैं ये क्वेश्चन सही भी कर रहा हूँ लेकिन मैं डबल द टाइम ले रहा हूँ एवरेज. तो मतलब मे बी इसको करने का एक क्विक तरीका है. तो आई यूज टू थिंक अबाउट दैट एंड फिर उसके सोल्यूशन में देखता था हाँ ये शॉर्टकट है. सो कैट में शॉर्टकट्स, कैट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवन दो यू आर डूइंग द क्वेश्चन करेक्टली, एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट अच्छी है, बट अगर तुम्हारी स्पीड नहीं है तो तुम उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं ला पाओगे. तो आई इवन अगर मेरा कैट अच्छा परसेंटाइल भी आता था तो आई यूज टू सी के कौन से क्वेश्चन आई कुड हैव डन इवन फास्टर. ठीक है, तो ये वाली चीज थी फॉर मी परसेंटाइल वाइज. व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, सॉरी? Any other examination or attempt apart from CAT or नहीं, आई वाज वेरी क्लियर कि अगर मैं एटलीस्ट नहीं, मेरे केस में एक्चुअली वेरी क्लियर, आई वाज वेरी क्लियर कि मैं कैट ही दूंगा. और कैट में भी इफ आई गेट ए बी सी एल, मतलब एल भी नहीं था, ए बी सी ही था. अगर ए बी सी मिलेगा देन ओनली आई विल क्विट, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू मे बी अनदर ईयर. और या फिर बाहर से एमबीए कर लूंगा मे बी लेटर ऑन. 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए उस टाइम पे चल रहा था. तो मेरे केस में क्लियर था कि मेरे को यही करना है और कोई मैंने एग्जाम नहीं दिया था इसलिए, फॉर दिस रीजन. Great, man. So, did you cleared all the ABC interviews or? So मैंने फिल 5 किए थे, A B C L K. Before that, I ABC forgot to ask if you can share the percentile of what is the percentile? हाँ, मेरा परसेंटाइल 99.51 था and I'm a GEM candidate, General Engineering Male. So I was 99% sure कि मेरे को IIM अहमदाबाद से कॉल नहीं आ रहा है. Lesser chance. 99.5. हाँ, बहुत कम चांसेस थे क्योंकि जनरली द ट्रेंड हैज बीन 99.5 पे बहुत रेयरली कॉल्स आते हैं. बट ड्यू टू माय वर्क एक्स प्रोबेबली मेरे को थोड़ा सा वहां पे वेटेज मिल गया एंड देन आई कुड गेट दैट कॉल. दैट्स व्हाट आई थिंक एटलीस्ट. तो वो था 99.51 था परसेंटाइल. आई फील्ड ए बी सी एल के. सी से कॉल नहीं आया क्योंकि उनके केस में वेटेज नहीं होता वर्क एक्स का उतना एंड दे हैव अ लॉट ऑफ वेटेज टू द कैट परसेंटाइल पर से. एंड फॉर जनरल इंजीनियरिंग मेल 99.7 से ऊपर ही चाहिए तुम्हें, 99.7 के नीचे नहीं आएगा सी से कॉल. सो आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ए बी एल के एंड आई क्लियर्ड ए बी एल. आई क्लियर्ड के का इंटरव्यू नहीं हुआ था, आई गेस ए बी एल का इंटरव्यू हुआ था. तो ए बी एल आई क्लियर्ड एंड yeah. Are you in doubt of choosing Ahmedabad or Bangalore? Because like I believe that it's Ahmedabad only is the rank one, but still a lot of people sometimes have this ki Bangalore is sometime rank one, then Ahmedabad is sometime rank one. They fight for rank ones, like for this years. So where you in a second thought ki Ahmedabad ही जाना है, sure है. मेरे केस में आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे अहमदाबाद प्रेफर्ड है. बिकॉज मेरे केस में उन दोनों का बहुत डिफरेंट टीचिंग स्टाइल है. बैंगलोर इज वेरी एकेडमिक ड्रिवन, फोकस्ड है, ठीक है, उनका क्लियर स्ट्रक्चर है. एंड अहमदाबाद इज वेरी केस बेस्ड पेडागॉजी, मतलब पूरा तुम्हारा एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे फ्रॉम डे वन. दे विल थ्रो इन लाइक तुमको डिसीजन मेकर के शूज में रख देंगे एंड यू हैव टू अप्लाई योर कंसेप्ट्स व्हाटएवर, बट यू हैव टू गिव योर डिसीजन. So concepts, frameworks भी सिखाते हैं, but it's a case based वाला learning. And I always find that learning much more enriching for myself. मतलब मैं उससे बहुत जल्दी सीखता हूँ. When I am in the shoes of the decision maker, I have to apply everything. And then मतलब case को analyze करना collaborative manner में within the group. For me, that learning process is the best. एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दैट अहमदाबाद का एक और रीजन ये भी था कि मतलब इन टर्म्स ऑफ बैंगलोर में रह चुका था बैंगलोर, क्योंकि शेल का जो प्लेसमेंट था वो बैंगलोर में ही हुआ था. तो आई वाज लिविंग इन बैंगलोर फॉर 3 years, क्लोज टू 3 years. तो फिर मेरे को ऐसा भी था कि चलो अब नई सिटी में अहमदाबाद में जाना है. अहमदाबाद का एक्चुअली उस टाइम पे काफी न्यूज में कवरेज भी आ रहा था बिकॉज पीपल वर गेटिंग selected for good post now. जैसे Raghuram Rajan was in limelight and lot yeah, तो थोड़ा there from IIM Ahmedabad. हाँ, अभी तो CA
हाँ। सीएस भी, जो भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स भी आई एम अहमदाबाद से, लास्ट 3 में से 2 आई एम अहमदाबाद एलम्स हैं। सो इस केस में, एंड मेरे बहुत अच्छा एक और रीजन था, मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे 2017 में, उनने मेरे से पहले एमबीए कर लिया था। कुछ अच्छा। लोगों ने डायरेक्ट फ्रेशर के तौर पे कर लिया था, कुछ लोगों ने 1-2 साल के वर्क एक्स के बाद कर लिया था। तो हम्म, उनसे भी बात करके मतलब मेरे को ऐसे लगा कि अहमदाबाद इज मोर सूटेड फॉर मेरे को जैसा लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो इसलिए मेरा प्राइमरी चॉइस था कि अहमदाबाद, नहीं तो बैंगलोर। अगर अहमदाबाद नहीं होता और बैंगलोर होता, हम्म, देन ऑल्सो आई वुड हैव पिक्ड बैंगलोर। ऐसा नहीं था कि मैं बैंगलोर नहीं लेता, हम्म, बट इट वाज सेकंड प्रेफरेंस। sure, man, sure. So currently you're in second year of IIM Ahmedabad, right? Or you've graduated? या सो फर्स्ट ईयर हैज, नहीं नहीं, सो आई एम 2021-23 बैच। Okay. सो अभी मेरा फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ 31st को, पूरा सब कुछ काम खत्म हुआ है 31st मार्च। अभी हम लोग समर इंटर्नशिप पे हैं 2 months, अप्रैल एंड मई, Okay. एंड देन इन जून सेकेंड ईयर विल स्टार्ट फॉर मी। So how's life at IIM Ahmedabad now? वेरी हेक्टिक। Okay. सो हाँ, आई एम अहमदाबाद का लाइफ थोड़ा सा हेक्टिक है Hmm. इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क आवर्स पुट करना पड़ता है, कितने असाइनमेंट्स होते हैं, डेडलाइंस, बिकॉज अल्टीमेटली तुमको काफी कुछ सिखाया जा रहा है तुमको 2 साल के अंदर। इवन 2 साल भी नहीं है, अगर देखा जाए इंटर्नशिप का टाइम निकाल दो, Hmm. बफर टाइम्स निकाल दो, तो 18 months 19 months में तुमको काफी कुछ सीखना Hmm. है। एंड दिस इज एक्चुअली वो सीरियस वाला फेज बहुत लोगों के लाइफ का, बिकॉज दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टाइम यू आर इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट Sure. का, मोस्ट मोस्ट लोगों के लिए, अगर अनलेस यू वांट टू डू अ पीएचडी लेटर ऑन। तो लोग काफी सीरियस होते हैं यहाँ पे जो आते हैं, बिकॉज तुम्हारे पास इसके बाद इतना ज्यादा चांस नहीं होता टू चेंज योर फील्ड्स एंड ऑल। Hmm. तो इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एज वेल, आई विल से के आईआईटी से काफी ज्यादा कंपटीशन है आईआईएम में। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट फोकस, a lot of focus on placements is there in IIMs. So हाँ, काफी बिजी लाइफ है, बट यू लर्न लाइक बहुत ज्यादा इधर, बिकॉज ऑफ द पीपल यू आर सराउंडेड विद। Hmm. सब ब्राइट माइंड्स है, काफी लोग वर्क एक्स के साथ है, काफी लोग फ्रेशर्स है जिनके पास फ्रेश आइडियाज है। Hmm. सो एंड पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, नॉट ओनली इंजीनियर्स। आईआईटी में तुम सिर्फ इंजीनियर से सराउंडेड होते हो, यहाँ पे कॉमर्स के लोग है, सीएस हैं इतने सारे, Hmm. आर्ट्स के लोग हैं, फैशन से हैं लोग, लॉ से लोग हैं, ऑल फील्ड्स। so you learn a lot of different perspectives, you learn a lot of different skills here, you learn how to communicate your thoughts। ठीक है, आईआईटी में there is a lot of focus on कि तुम्हारा एनालिसिस कैसा है, तुम्हारा काम कैसा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होती है तो के सामने वाले को समझाने वाला, दैट इज द फोकस ऑफ आईआईएम का स्टडीज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील एट आईआईएम। एंड दैट स्किल यू लर्न लाइक आते ही, तुम्हारा मन नहीं भी होगा, तुम जिस सराउंडिंग में हो तुम सीख जाओगे। सो दैट इज द लाइफ, बट थोड़ा फन भी होता है। इट्स अ ड्राई स्टेट, बट ठीक है, थोड़ा फन भी है अहमदाबाद में। Got it, got it. बट वी डू ट्रिप्स वगैरह ब्रेक्स में, और क्या। Okay. बाकी तो दमन एंड दीव से सोर्स तो हो ही जाता हो। हाँ, ये सब तो हो ही जाता है। गोवा चले गए थे हम तो टर्म ब्रेक पे, 10 दिन का ब्रेक था, वी वेंट टू गोवा। Great. So what do you opted for? Marketing, finance, or something else? What do you working on? तो अभी हमारे फर्स्ट ईयर में इट्स ऑल द कोर कोर्सेज आर देयर। Sure. सब डिफरेंट फिनेंस के कोर्सेज होते हैं, मार्केटिंग होते हैं, एंड दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल। Hmm. सो अभी तक कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। Hmm. इट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड ईयर के कोर्सेज दैट यू पिक, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है। इफ यू सो सेकेंड ईयर से तुमको फ्रीडम है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्टिव्स डू यू वांट टू पिक। Okay. सो अगर किसी का मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो वो लोग मार्केटिंग के कोर्सेज ज्यादा उठाएंगे, Hmm. ठीक है। किसी को स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है तो वो स्ट्रैटेजी के कोर्सेज ज्यादा, फिनेंस वाले फिन के ज्यादा कोर्सेज उठाते हैं, एंड दैट्स हाउ यू स्पेशलाइज। सो फॉर अस अप अंटिल नाउ सब लोगों ने सेम चीज पढ़ी है, किसी ने कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं किया है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू डिसाइड योर ट्रैजेक्टरी, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन समर इंटर्न, कि तुमको What's उस your plan? फील्ड में ही आगे कंटिन्यू करना है। What's your plan? So for me, I like
स्ट्रैटेजी, तो मैंने सेकेंड ईयर के लिए स्ट्रैटेजी के काफी कोर्सेज उठाए Mm-hmm. हैं. सो स्ट्रैटेजी कंसल्ट, सो माय इंटर्न इज आल्सो एट अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म. सो उसमें भी काफी स्ट्रैटेजी का यूज होता है. Mm-hmm. सो अप अंटिल नाउ माय इंटरेस्ट इज इन स्ट्रैटेजी वाला फील्ड. थोड़ा इंटरेस्ट फिनेंस में भी है काफी, तो फिन के भी कुछ कोर्सेज उठाए हैं, मतलब लिए हैं सेकेंड ईयर में. सो आई विल एक्सप्लोर दैट एज वेल. समर इंटर्नशिप विल गिव मी अ गुड आइडिया अबाउट हाउ मच आई लाइक मैनेजमेंट कंसल्टिंग एज अ फील्ड. देन सेकेंड ईयर कोर्सेज विल हेल्प मी रियलाइज कि ठीक है, एक्चुअल जो इन डेप्थ नॉलेज है, अभी तक हमने बेसिक सीखा है फिनेंस का, तो आगे इन डेप्थ फिनेंस में को कैसा लगता है, तो दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो आई वुड से अभी कॉन्क्रीट प्लान नहीं है मेरा सेकेंड ईयर का. It's very open up until now. How long this internship period is? How many months? 2 months. So until end of May, we will be in our intern. Okay, okay, okay. And when the actual placement and everything starts in Ahmedabad? So final placements is in January 23. So based on your internship performance, you might get a PPO, pre-placement offer. If you choose to accept that PPO, you might sit out of the placements if you want. So you don't need to be a part of the final placements. Okay, you have to take the decisions, take the call. Yeah, so they give like the PPO offers are rolled out after internship, 1 or 2 months after internship, and you have until end of December to decide whether you want to accept the PPO or sit for the final placements. So there is a lot of time. You can explore दूसरे कोर्सेज जो तुम टर्म 4 टर्म 5 में लेते हो सेकेंड ईयर में. उसके बेसिस पे यू कैन टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू कंटिन्यू उसी फील्ड में और यू वांट टू चेंज योर फील्ड एंड ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट प्लेसमेंट, डिफरेंट कंपनी इन फाइनल प्लेसमेंट. So those are the things. Great, man. So I would now want to know, because we have covered a lot of topics related to preparation of IIT, preparation of CAT, life at IIT Bombay, life at IIT Ahmedabad, life at Shell, working and all this thing. I would want to know that basically you have been to the finest institution, okay, and worked in one of the best companies. What are your goals now? Means you must have you ever set your goal ki this is where I want to reach in some 5 years or 10 years, or maybe this is the ultimate aim of my life, that's where I want to reach. Maybe it's super, La La Land wala goal is also fine, but yeah, this is where I want to reach. This is my height, I want to touch that thing. Have you ever set a goal, something like that, or aim, something of that sort? हाँ, so for me it works differently. मेरे लिए क्या काम करता है कि I set small goals and once I achieve that ना, that gives me more confidence to set up more goals or set up more ambitious goals. So rather than saying कि मेरे को 5 साल बाद ये करना है, I know कि 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है. अभी कोविड ही हो गया, कितने लोगों के प्लान चेंज हो गए, राइट? सो फॉर मी व्हाट वर्क्स इज कि अगले 1 साल का गोल बनाओ, 2 साल का गोल बनाओ. लॉन्ग टर्म एक विजन होता है, एक गोल होता है. जैसे मेरा भी है कि बाय 35 मेरे को इतना कुछ सीख लेना कि फिर मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं, इवन क्विट करके कॉर्पोरेट जॉब, अगर सब कुछ क्विट करके सिंपल कोई एक बिजनेस में भी खुद का स्टार्टअप हो, या मे बी एक रेस्टोरेंट खोल लूं, चेन खोल लूं, कुछ भी खोल लूं. वो सब चीजें बात की बात है, ठीक है. दैट इज अभी मैं सोच सकता हूँ, आई कैन हैव दोज ड्रीम्स. बट फॉर मी व्हाट वर्क्स इज लेट्स से कि अगले 1 साल और 2 साल में क्या करना है, एंड व्हेन आई अचीव दैट ना, दैट गिव्स मी ऑल द मोर बूस्ट. लाइक आईआईटी में था तो मेरा फोकस था कि ठीक है, आईआईटी की पढ़ाई अच्छे से करनी है, अच्छे से सीखना भी है, एकेडमिक वाइज भी, और फ्रेंड्स भी बनाने हैं, नेटवर्क भी बनाना है. देन शेल में ऐसा था कि ग्रेजुएट प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट करना है. इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर जाके फॉरेन कल्चर में, तो वहां पे भी लोगों के साथ नेटवर्क बनाना है, सीखना है. एंड देन आईआईएम का अभी मेरा शॉर्ट गोल यही है कि मेरे को आईआईएम में अच्छा सा बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम, मेक अ लॉट ऑफ, मतलब आई थिंक नेटवर्किंग इज वन थिंग दैट यू विल रियलाइज एज यू गो अप in your academic life, professional life, you realize the importance of networking. Definitely. Knowing people outside of work as well, outside of your academic life as well. तो मेरा यही एम है कि मैं जब यहाँ से जाऊं तो मैं मैक्सिमम लोगों को जानूं आईआईएम से, जो मेरे बैच में थे या मेरे सीनियर बैच के थे या मेरे जूनियर बैच के थे.
Sure. So that is my goal, and perform good academically, have a placement जिसमें मुझे काम करने में अच्छा लगे. And then once I achieve that, then I'll realize, मतलब decide my next goal. Hmm. So for me अभी यही है कि get a job जहाँ पे मैं अच्छा खुद का स्किल सेट यूज कर पाऊँ, एंड इवन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी मेरा रेस्पेक्ट हो ऑफ माय वर्क, of my thoughts, of my views, all those things. So अभी के लिए मेरा short goal यही है. Definitely makes sense. You're more into that strategic planning, because we can't हाँ. strategize for next 5 years or 10 years because we don't know what's gonna happen. Okay, if China will attack us, everything is gone, man. Exactly, Okay, so we exactly. अभी can't. World War 3 हो गया तो World War 3 हो गया तो सब Exactly. plans change हो जाए. कुछ कर नहीं सकते उसका. So yeah, that is correct. You should strategize for the 1 year or 2 year max. That is maximum. Okay. Basically, हाँ. everybody has some long aim, or this is what I want to achieve. This is what I want to become. But you can't strategize for that. You can strategize for next Exactly. next 2 years or something of that sort. Let's हाँ, exactly. let's Tarun come to your hobby. The most interesting part. Okay, tell me about it, man. What is it? हाँ तो yeah, my hobbies, there are a lot of hobbies. So I'll start first of all. मेरे को adventure sports काफी पसंद है. So I've done a lot of adventure sports. Sure. I've done, but मतलब New Zealand में there is a place Queenstown. It's called the adventure capital of the world. So I went for a 3 week backpacking trip to New Zealand, solo trip. Okay. तब मैंने पूरा न्यूजीलैंड एक्सप्लोर किया था, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स देयर. For New Zealand, basically, the first thing comes in my mind when you say New Zealand is bungee jumping. I'm not sure. हाँ तो बंजी भी किया, नेविस. हाँ, नेविस ट्रायलॉजी होती है वहाँ पे. सो इट्स बंजी जंप, स्विंग एंड कैटapult. सो Okay. ये तीनों किया था एक ही दिन में. बंजी इज रियली ऑसम देयर. उसका वीडियो मैं कभी कभी देखता हूँ, एंड दिस कोविड थिंग वाज देयर, वी कुडंट गो आउट, आई वाज जस्ट प्लेइंग दैट. जिस दिन मैं न्यूजीलैंड से अपना ट्रिप खत्म करके आया था, उस दिन कोविड का फर्स्ट केस आया था न्यूजीलैंड में. सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने पहले प्लान कर लिया. इफ आई वुड हैव वेटेड, मेरा वो नहीं हो पाता ट्रिप. सो दैट इज द केस. रिवर राफ्टिंग काफी पसंद है मुझे, जेट स्की, वो भी किया है, स्काई डाइविंग की है न्यूजीलैंड में, दैट क्वींसटाउन के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग. सो ये सब चीज है एडवेंचर स्पोर्ट्स. Then I have also done a basic mountaineering course. Mountaineering, Skydiving, trekking काफी what पसंद. height? Skydiving is from what height? Sorry, Skydiving is from what? sky skydiving I did from 12,000 feet. 12,000. वहाँ पे. Okay. Okay. हाँ तो क्वींसटाउन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में Because डिफरेंट डिफरेंट you हाइट were पे with होता है. parachute or somebody was there on your back. नहीं नहीं, somebody is there, was there on my back. वो नहीं अलाउ करते बहुत, unless you दुबई are में करते हैं, trained. दुबई में करते हैं. हाँ मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दुबई, बट हाँ ठीक है, थोड़ा ट्रेनिंग तो होना चाहिए, और एनीबडी कैन गो. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, Basically, बट वहाँ पे तो क्लियर था, Dubai, इफ यू आर नॉट. yeah, I'm saying basically in Dubai, you are allowed to jump alone also, but there should be one cameraman who's recording. If in case you lose everything, you're not able to pull the parachute, then that camera person will come and pull first for you, then for himself. अच्छा 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 अच्छा. That is Then yeah, that would be even crazy. So that's next on my list then. Okay. Great, man. Great. But हाँ तो वो चीज थी. I was saying हम basic mountaineering course किया है मनाली में. It's a month long course. Yours. हाँ, month long, 1 month. तो मनाली में था base camp. Then we had summit on the final day, Balachandran Peak, which is at 15,000 feet. तो वो भी काफी 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 अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. 2014 में किया था मैंने. सो वो भी पसंद है मुझे थोड़ा. ठीक है. इसके अलावा आई डू सम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, तो वो मेरा इंटरेस्ट है. आई एम बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो constantly, following the markets and investing. Then current affairs पढ़ना, पॉलिटिकल न्यूज वगैरह, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, इसमें काफी इंटरेस्ट है. माय होल IIM Ahmedabad interview, 50% of the interview was around Indian budget, Indian politics, current affairs.
स्टॉक मार्केट्स। तो उन्होंने वही पूछा था, बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली मतलब मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और मैंने अपने हॉबीज गिनाए थे, एंड दे वर लाइक या वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दे आस्क्ड मी अबाउट ईच ऑफ दोज हॉबीज इन दैट इंटरव्यू। सो या ये यही सब हॉबीज है। बोर्ड गेम्स काफी पसंद है। देयर Oh, इज अ बोर्ड गेम कॉल्ड कटान, इट इज माय फेवरेट। आई एम what नॉट श्योर name? इफ यू अबाउट What name? कटान, CATAN, कटान। I'm not sure. इट्स एन अमेजिंग गेम, तो वो काफी खेलते हैं। और पोकर, Ah, प्लेइंग कार्ड्स तो वो बचपन से ही खेलते हैं, तो पोकर काफी खेलता हूँ मैं। तो great. या दीज आर द थिंग्स दैट आई लाइक डूइंग आउटसाइड So it's a ऑफ माय वर्क। long list, dude. It's a long list. हाँ हाँ हाँ, Basically, this वही is what मैंने। the perception we have about IIT. I am graduate student that you must be nerd all the time into studies, but it's not the fact. Because like a lot of people whom I'm interacting, whom I'm talking, who I'm bringing the podcast, they are also like the same. Because somebody says that I'm always into Bollywood. I watch a lot of movies. Somebody says that I play cricket, and I can even leave examination if the test match is going on. Okay. So I'm curious, now you that you are so much of a adventurous kind of a person, and it's a yeah great. It's just a serious stereotype basically, I would say. हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं, आई ऑलवेज वेक अप एट 4, आई वॉच हाँ, दैट होल टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलियन मैचेस आर रियली कूल। मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छा इंडिया बहुत मजा आता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई थिंक हाँ, टॉकिंग अबाउट एशेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं नहीं नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इन जब भी जाती है इंडिया। हाँ। okay great man lot of things are there man it's great so anything you play like any instruments or something of that sort नो, नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो कभी नहीं बजाया मैंने। no no even बट आई मतलब आई लाइक टू गो टू कॉन्सर्ट्स एंड okay गेट ड्रंक एंड डांस। तो वो मेरा हॉबी है, नॉट प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। great listen to instrument is your hobby यस यस, लिसनिंग टू इंस्ट्रूमेंट। yeah या basically this the next thing which I want to discuss with you is quite philosophical okay you can say that I don't want to answer such question also basically नो नो नो, just sometime back I discussed with Khushi Purohit she is like an ID all India rank one when I asked her that how was the moment when you got all India rank one because NID has very less seats and she was not even expecting that she is gonna qualify the examination because you can't say you can't predict because a lot of bright mind नहीं। examination she was like uh, it was meant to happen basically she has become more spiritual than she ever was so do you believe in all this thing that because you have been to the finest institution so how does the spirituality or something related to that sort play a role in your life do you believe in destiny or something of that sort it's like hard work is the game how do you take all this thing I For me, I personally feel it's a combination. You cannot rely fully on, let's say, a good faith or good spirituality, or let's say Hmm. कि ठीक है सब अच्छा हो जाएगा, लक से या तो, and you cannot only rely on hard work. There are a lot of hard working folks जो कि जो भी हम लोग हैं अभी IIM में, IT में, कहीं पे भी हैं लाइफ में, उससे बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक Sure. है, बट स्टिल they are not at the place probably that they deserve, right? Because of some hard luck. So I feel it's definitely a combination, and you need to respect where you are. Like you need to learn from people who are above you as much as from people who are maybe not above you but below you, right? They are probably not at the same level with you, but they know probably much more than you. So you need to just make sure that uh, you you actually be grateful to people, ठीक है, जिन्होंने contribute किया है from where you were to where you are. So for me, I actually believe that success is uh, as much hard work as much as luck, right? 50-50, ठीक है, मैं diplomatic answer नहीं दे रहा, but it's Yeah, it's got it. it's actually नहीं नहीं, it's actually a lot of luck. Like for me, अगर मैं ऐसे ही सोचूं ना कि कोविड नहीं होता, तो I would not have been here, right? हाँ मैं ये नहीं लेता
कॉल के मेरे को मे बी फॉर्मल ब्रेक लेना, आई वुड हैव बीन एंजॉयिंग, मतलब शेल में ही कुछ ना कुछ करके किसी पाथ पे पहुंच जाता, राइट? Hmm. So these things that happen in your life at various stages, for some people it turn out to be good, for some people maybe not so good, Hmm. unfortunate. So yeah, you need to make the best of what it is, in terms of the situation, right? You need not give up to on the situation, but you need to see how you can leverage it. So that is what I feel. Uh, i always i always am grateful to people, to situations, Right. to all the institutions and people who have brought me here, Hmm. and I will remain that way going forward as well. So मेरे लिए that is the case कि इन चीजों पे हमेशा you should be reminded कि ठीक है, it's not only you, it's about that collective journey that you have played with every one of them. Basically, more than anything else, it makes you humble. At हाँ, yeah, that, because eventually, even if it also humble and also helps you to relieve the stress and this thing, because you don't take the all the time, you should not take the blame on yourself, because not everything is in your control. Something is like beyond your controllables, as you are saying. So हाँ, it's difficult, at sometimes. Then this thing helps, because I asked you this question because I haven't asked this question to anybody else who has come to this podcast. Because from last some time, from last 1 month or 2 months, I've been studying about spirituality, meditation, yoga. I'm reading Bhagavad Gita and all these things. So I have all the time in that zone of relating everything to spirituality, and because the real meaning of life is nothing. Okay, so हाँ, it's all about, like, as it's rightly written in Subtle Art of Not Giving a Fuck, is you create your own fucks and then you solve it. That's what the life is. Okay, you keep 11 12, you create the fuck that I want to go to IIT Bombay, you cleared it. Then you create the fuck that I going to Shell, you cleared it. Then you create the fuck, you solve it. That's yes, what the life is. Okay, so that is, I am into that yes, zone. I've been to that zone of being in existentialism. I get out of it and it jumps straight into spirituality. So it's a lot of things. So I actually, you have a very great take about it, rather than thinking that the world works with only luck and destiny and all this thing. We should think that it's uh 50-50, half hard work, half and, let's take both in hands and let's continue with that. Basically, can't say, like, you can't say exactly, it's 100% hard work, or you can't say it's 100% luck. yeah, You need both. yeah, yeah. Sure, And man. you asked, right, what's the long term goal? I think the long term goal is to be happy. Ultimately, whatever you do, ठीक है, Uh, कितना भी तुम कुछ ये सब कर लो, whatever you achieve, ultimately, if you are not happy, you are not there with your family, you're not enjoying your life, what you're doing, मतलब उसका कुछ, ultimately, it's not beneficial for you. You are just, so I have a, like, I can discuss like for an hour or two for on just this topic of happiness, because I have a very strong belief that happiness as a state of mind is just a phase. Okay, you can't be yeah, happy for so long, or you can't be forever. happy for so long. You can't. It's like it's the worst thing. You need to be sad to be happy, right? You Agree, need to be sad to 100%. be happy. That's the game. Yeah. That's the game. That's the layer. Because somebody who hasn't faced enough thing in their life might say that कि नहीं नहीं ये सही है वैसा वैसा है. But Somebody who's experienced a lot of things, they are like कि I am above all this thing. It's okay. Happiness is a part. uh, Sadness is a part. Everything is a part of life. Man. So currently, yeah. what right now in the present, or maybe the things you are going on, what is the state of mind right now? Means, are you completely charged up, boost up to do a lot of things, or are you in the state where you are not that happy, you're sad for some reason, or what's the state of mind right Yeah, so for me, right now, the state of mind would be excited now? Okay. because I'm right now trying out a new field altogether. Hmm. In my internship period. So Hmm. I think, yeah, just after the term examinations end, that is the phase when you are just laid back. You are like, ठीक है, काफी stress हो गया, Sure. काफी exams हो गए. Yeah, you just want to chill at that time. तो हाँ, एक हफ्ते पहले मेरा वो था. हाँ. But right now it would be excitement. So हाँ, IIM का एक ये भी है कि you are
फेज चेंजेस अ लॉट कि तुम हैप्पी हो, तुम अचानक से स्ट्रेस, तो मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट, एंड देन देयर कम्स अ चिल फेज. सो अभी मेरा एक्साइटमेंट वाला फेज है, एंड आई एम quite excited to be in Bombay. I have lived here for 4 years, 13 to 17. I love the city. So after like 3 years, I've come here today. I have landed in Mumbai today. So I'm also planning to enjoy the city, go around places if I get some time over the weekend. तो वही वाला फेज है, एक्साइटमेंट वाला फेज है. आई हैव बुक्ड टिकट्स फॉर आईपीएल मैच. आई विल बी वाचिंग द मैच दिस वीकेंड यार. गुजरात का, आई थिंक गुजरात वर्सेस लखनऊ. आई डोंट रिमेम्बर क्या गुजरात और कुछ यार. मुंबई इज ऑल सोल्ड आउट मैन. मुंबई इज माय फेवरेट टीम. इट इज ऑल सोल्ड आउट. आई जस्ट लुक फॉर मुंबई क्योंकि हम वीकेंड पे जा सकते हैं. I think it's Gujarat versus Lucknow. I don't clearly remember. Dude, I've already seen No. It's actually Gujarat versus Delhi. So Rishabh Pant will be there. ठीक है, चलो मतलब ठीक है ना. No MI, no RCB, no CSK. Being very honest, हार्दिक पांड्या के लिए तो मैं नहीं जा रहा. ठीक है, हम तो जा रहे हैं. But he is performing well with this IPL top team, Lucknow. Do you think Lucknow will reach the finals this year? No. Let's make a bet. No. You don't think? No. Sure. I think they will be at least in the final four. Semi होगा, हाँ, for sure. Semi, I agree, 100%. Semi होगा. Semi. But final. If the IPL is scripted, then तो 100% sure. ठीक है. If not, then still I'm sure that semis में तो पहुंचेगा for sure. Semis तक पहुंचेगा. Anyway, मुंबई या सीएसके को जीतना है. हार लेगा भी, मुंबई हारेगा, कुछ मैच हारेगा, फिर शुरू करेगा वो लोग. फिर शुरू करेगा वो. सूर्य आएगा तब शुरू होगा मुंबई का. इसका अब तो आ गया ना, अब तो नेक्स्ट मैच से आ रहा है ना. हाँ, नेक्स्ट मैच आएगा. इस मैच भी खेल सकता था. दे वर अ बिट कॉशियस के इस मैच नहीं खिलाते. Sauli, some hour back only I saw that reel in Mumbai Indians Instagram that Ishan Kishan is saying सबको पता है कौन आने वाला है. That Sky is coming. Yeah. So it's great man. I'm one of my favorite players, Surya Kumar Yadav. Super. Samson अच्छा लगता है तुम्हें? Samson अच्छा लगता है? संजू सैमसंग सही है, अच्छा है. But if you say कि top, अगर if you ask me कि यार, तो फिर उसमें तो मुश्किल ही है. लेकिन is a player. और अभी he is in the same. He is in the same hotel that I'm staying right now. वो नीचे ही है second floor. बुलाओ बात करते. नहीं बोला. Access नहीं है मुझे उस floor का. Otherwise I would have gone. I'm from Rajasthan. I would have supported ना उस time पे Samson को भी. नहीं, बुलाओ बात करते यार अभी. कभी next podcast उसी के साथ. उसको बुलाते यार, बात करते क्या कर रहा है भाई, थोड़ा ध्यान मान देगी तो प्रैक्टिस इंडिया से कभी अच्छा नहीं खेलता. बाकी अच्छा खेलता है हर सर्किट में, बट इंडिया से जब भी खेलता है फेल हो जाता है. वैसे ही है. बहुत प्लेयर है यार. ज्यादा हमको तो डर है क्लिप वुप निकाल के कोई कंट्रोवर्सी ना कर दे. हाँ, वही डर है. बहुत प्लेयर है जिसको येलो टी शर्ट पहना दो तो मारने लग जाते हैं, लेकिन ब्लू पहनाने पे नहीं खेलता. ऐसा है. बहुत लोग अच्छा प्लेयर ऐसा है. लेकिन ठीक है, ग्रेट. So ये काफी ये है. Movies and all, do you watch movies, do you read books, web series, do you? So I watch movies. Long back that you are a Bollywood person or something. हाँ. So उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा देखता था. अभी भी मैं काफी मूवीज देखता हूँ. I watch टीवी सीरीज. अहमदाबाद आके थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल जो मेरी पसंदीदा सीरीज है मैं तो वो देखता ही हूँ. लास्ट सीरीज आई थिंक मनी हाइस्ट का सीजन देखा था. बट माय फेवरेट सीरीज इज पीकी ब्लाइंडर्स. आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन. उसका जो नेक्स्ट सीजन होगा, आई रियली लाइक दैट सीरीज. वांट टू स्टार्ट इट यार. मेरे फ्रेंड लोग डेफिनेटली रेकमेंडेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ पिकी फकिंग ब्लाइंडर्स. यार ये एग्जैक्टली क्लिप्स वगैरह काफी दिखते रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं देखता रहता हूँ यार. मनी हाइस्ट या पूरा देख लिया कि बाकी है अभी लास्ट सीजन? नहीं, देख लिया. मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट सीजन वही देखा था. लास्ट सीरीज वही देखा था. बिकॉज़ डिड यू लाइक द एंडिंग?
not so much. I didn't like it now. Okay. मतलब I was expecting a bit more, and one of the favorite characters अगर मर जाए तो you don't like it. प्रोफेसर प्रोफेसर को मार देना मतलब आई वाज लाइक कि उतना मतलब satisfied भी नहीं था dissatisfied भी नहीं था because it's okay it's like they ended on a note that it felt like an ending कि चलो ठीक है now everybody is safe no charges no case nothing and everything is sorted nothing. but the writing was good maybe execution wise चलो जो भी है थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा नहीं था जिसमें लास्ट सीजन में सबको बुरा लगा कि बहुत अच्छा हो सकता गेम ऑफ थ्रोन हाँ वो तो उसमें बहुत एक्सपेक्टेशन था लास्ट सीजन द वे दे बिल्ड अप द सिक्स्थ सीजन भाई मतलब it's लेट डाउन था movies and anything you're watching these days no just the web series अभी अभी हाँ आई वॉच कश्मीर फाइल्स रिसेंटली great man सो वो देखा था अभी रिसेंटली आर सुना है काफी मचा रही है बॉक्स ऑफिस पे सो मे बी इफ आई गेट टाइम राजामौली हाँ राजामौली है तो वो मचाना ही था तो ऑब्वियस है उसके नाम पे 100 करोड़ पैसे रखे वाले आप बनाओ मूवी ऐसे उसको उसने फीस लिया 100 उसने फीस लिया 110 करोड़ ऑफ डायरेक्शन मूवी का डायरेक्शन का तो लेना चाहिए उसकी बाहुबली 1 is like 1900 crores and बाहुबली 2 is like 2100 crores तो हाँ और ये वाली मूवी हाँ दिस मूवी इज गोइंग टू बी हाईएस्ट ग्रॉसर अभी सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर है आई थिंक इट विल बाहुबली 2 को क्रॉस कर देगी ये सो इट्स गोना बी राजामौली के नाम पे बिक जाता है भाई और वो इज लाइक द बेस्ट इन द बिजनेस ऑब्वियसली इज द बेस्ट इन द बिजनेस वो जान से हाँ डेफिनेटली बट 100% देता होगा 105% देता होगा भाई कि मतलब ठीक है दिक्कत नहीं है साल 2 साल ज्यादा लग जाए ठीक है बनाएगा बट बनाएगा तो प्रॉपर ग्रेट मैन नहीं नहीं so we have discussed a lot of things about everything about your life your strategies your goals aims spirituality also little bit maybe someday we'll create a proper podcast वो सैमसंग को भी बुला लेना उससे ही बात करेंगे उसको भी थोड़ा जानना पक्का जैसे हाँ so पक्का I think a lot of discussion has been done and it's going to be a great podcast so let's wrap it up over here only before anything else I just want to ask you did you like this podcast is it good bad terribly bad how was it definitely I think it was awesome for me first of all मैं अपने साइड से सोच के देखता हूँ it gave me a chance to relive all the memories starting से मतलब to just think about that for me it's a journey of 10 years right from the time we started चलो 2011 से अगर IIT का ही टाइम मान लो स्कूलिंग छोड़ दो तो भी it was 10 years so it was very nice in terms of interaction as well I think it was very organic it was not very structured I don't like a structure question answer उस type का podcast so I think the best part was it was kept organic by you so cheers to you in that terms और काफी interactive था so you also gave your views on certain things right and that is the best part about the podcast okay ठीक है it is a conversation not a question answer session as I told it's going to be a candid chat between us basically life your strategies goals what we are doing what we are not so it's great man so I just want to throw some stats okay for the people who are watching like 83% close to 82.4 something percent of people who are watching don't subscribe to my channel I don't know why because they are not paying for it it's completely for free so at least you should subscribe it don't you think Tarun yeah definitely so basically if I'm influencing different people who has achieved great thing in their life like Tarun has a lot of other people also I want to bring up because their first thing they see is subscriber कितना है भाई subscriber बताओ तब अपन आएगा so for that reason you have to subscribe this it's for free yeah there is a saying when you are good at something never give it for free and Nitish is so cool that he is giving it out for free so you should subscribe it right this is the line ये line intro पे bro ये line intro पे sure man यही डाल देना
हाँ, मेन लाइन ये डाल देना स्टार्टिंग में इसको thumbnail. एक अलग क्लिप बना के निकाल देंगे भाई. Yeah, No, no, like definitely. this is the basic USP or basic target with this podcast is I want to do a fun chat with those people who has achieved a lot of things in their life, because a lot of experience and a lot of people who might like missed out, who deserve more what they get it right now. For them, they enjoy it, they listen to it, and also some aspirants who want to go through it, want to travel a journey like yours, listen to you, listen to like it's like basic thing which I want to say through this podcast is somebody who has achieved a lot of things in their life hasn't done some rocket science thing. Okay, it's normal, everybody can do it. You just have to be serious, you have to be hardworking, the all good terms that we hear, that hard work, patience, perseverance, and all these things, you have to apply it in your real life. It's not just for listening or saying, because lot of thing comes in your life where you get thrown back, you have to come back and you have to fight for it. So that is the basic thing we can like bring out of this podcast, and a lot to learn from you. Thank you so much, Tarun, for joining this Yeah. channel. It's amazing talking to you. I myself will take lot of inspiration out from you. So thank you from my behalf and also from the all the people who are gonna watch this. Thank you so much, man. And thank you for having me as well. Thanks, Nitish. Yeah. Great, man. Let's conclude it over here only. Thank you so much, guys, who are watching this. And if you are still watching it right now, you must have enjoying it. Then I think you should subscribe it. You know the drill. Like, share, and subscribe. Uh, just that. Thank you. तो हम लोग इधर Yeah. इधर सा ये थैंक यू वाले पार्ट पे रैप अप करेंगे. उसके पीछे Good. ऐसा एक हाँ. पिक है, ऐसा लगाएंगे एंड डन. हाँ. यही Done. मजा आया भाई. Awesome. बहुत बढ़िया. बहुत सही मजा आया यार. टाइम का पता ही नहीं चला लाइक. भाई अरे हाँ भाई 12:10. चलो ठीक है, वैसे भी हाँ टाइम अभी का. 1-2 घंटा है मेरा सोने का टाइम के हिसाब से. तो हाँ यार मेरे भी आदत यही है.